and I am on Vadodara Junction and I'm boarding inside the train. That's memo train. It is a special local trains in Gujarat, na? It is so empty and if anyone can come. It's like a big bus, you say, of about 6-7 boxes. It's fun to travel in this. Na? Air comes so nicely and environment around Gujarat between Vadodara and Vasad. Last time when I visited Vasad, na, it was night, so I could not see. But this time I'm trying to capture the moments. So excited. शानदार सुनहरे मार्ग से कितना शीतल है ये पेड़ की छांव. वाह, यही तो चाहिए ऐसे ही रास्ते. फिलहाल मैं वासद में हूँ और मैं अपनी डगर सुनिश्चित कर रहा हूँ एक शानदार जगह जाने के लिए. वाह, कितना मस्त मार्ग है यार. बट यू नो, alone in this way there are fields, okay, and what else, here also fields. So natural place, na? Well, water, tubes, very nice. Let's meet later. Wow. कितना शीतल हवा बह रहा है यार. शीतल हवाएं. Creatures, birds, chirpings, खिली धूप. ये सुकून बड़ोदरा के ऑफिस में कहाँ. नेचर में इतनी हलचल, मध्यम धूप और शीतल मंद हवाएं मन को पुलकित कर दे रही हैं. और थोड़ी ही देर में हम अपने ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन के पास पहुंचने वाले हैं. वाह, किस एक्साइटेड. शक्ति कुटीर है और इसका भी निर्माण कार्यक्रम चालू है. और यहाँ से हमें दिख रहा है माही नदी और ये एक मेडिटेशन हॉल हो रहा है. काफ़ी सारी केबल्स लग रहे हैं अराउंड द कैंपस. ये शक्ति कुटीर से थोड़ा नीचे आने पर ही जस्ट वाव, फ्लावर्स इन द वे.
see. So this, this is very biodiversity campus. So snakes and all these things are there. Okay, let's move through a small gateway. Hello. Wow, grass cutting has done. This looks nice. And currently we are in Sri Sri Gaushala at Gujarat Ashram. Here all the cow breed are protected and are safeguarded here because India was lacking the different breeds of cow. So Gurudev initiated this to protect the different breed of cow of India. So Gujarat Ashram, there are so many, and also in Bangalore Ashram, all our breeds are protected here. There are so many cows, very long distance. This is big Gaushala, and here now atmosphere is very peaceful. Outside there may be heat, but very peace and smelling good. It feels good. Let's live a life with joy. Let's live a life with joy. Let's give a smile to everyone. Let's give a smile to everyone. To everyone. To everyone. To everyone. To everyone. Sangachatvam. 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 चुपकी हो जाए. Sangachatvam. Sangachatvam. आँखों में रोशनी है, दिल में सपने हैं. आँखों में रोशनी है, दिल में सपने हैं. अब ये जिंदगी खुशियों से भरी है. अब ये जिंदगी खुशियों से भरी है. और अभी थोड़ी देर पहले हमारा एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम, दैट इज साइलेंस प्रोग्राम, ख़त्म हुआ वसाद आश्रम गुजरात में. और लोग जा रहे हैं ना, मतलब जाने का मन नहीं कर रहा है ना लोगों को. मेरा भी मन नहीं कर रहा जाने का. खैर एक आखिरी बार मैं एक गार्डन में जाके वहाँ से कुछ मोरपंख लेना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ मोरपंख मिलते हैं ना. गार्डन ऐसा है ना, मोर, गिलहरी, बंदर, सब कुछ हाई क्लास बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे है. कोर्स वॉज वेरी गुड ना, आनंद भैया का कोर्स इतना अच्छा, मतलब चीज़ों को पहले ही माइंड को रिलैक्स कर देना कि सवाल ना करे मेडिटेशन के बीच. इतना अच्छा से नॉलेज डिलीवर करना ना, और ध्यान की गहराई. वाह, मतलब ऐसा कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो और तुमने सुदर्शन क्रिया किया, यू फील वाव ना. उसके बाद वाव, अपर लेवल का वाव. इट वाज लाइक दैट. एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम, इट वाज माय सेकेंड एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम. बट जो नॉलेज हिट किया, जो समाधि हिट किया मुझे ना, दैट वाज सो नाइस ना. और ब्यूटीफुल नेचर देखो, माही रिवर डिसाइड, इतना सुंदर सा आश्रम बसा हुआ है ना नदी के किनारे. कितना अच्छा ये
कंस्ट्रक्शंस ऑल अराउंड हो रहे हैं ना। Blessed to be here beside my river and a beautiful Vasad ashram at Gujarat. जाने का मन नहीं कर रहा लेकिन अब जाना पड़ रहा है। ठीक है, साथ साथ में यश भाई और साकेत भाई भी हैं। हाँ सभी लोग हैं, दीदी भी हैं, हाँ भी हैं। बाय।